Pakistan, stop killing! 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 Pakistan, stop abducting! 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 It's already online now. Yeah, I sent you the link and I'm live. Let me check. This one, huh? Can I send this link then Where? to my friend? Yeah, absolutely. This link I need to send. So You can how- send the link that I sent you. Just But then- copy it in WhatsApp. Yeah, but then they have to click on videos. Let me Sure. check. Oh yeah. No, but go to YouTube. Go back to YouTube. Okay. Quality. Something to share, you know. Yeah. If you could go back to videos. There you go. Yeah, you go. That should work. Yeah. Thank you. Yeah, of course. They are raping, killing women, they are killing journalists, they are killing lawyers, they are killing teachers, they are killing the cream of the Baloch society. And the same thing is happening now in Sindh as well. They are repeating the same genocide in Sindh. Balochistan is a no-go area for journalists. It has been directly ruled by the military. There they have a rubber stamp assembly, but it is run and ruled by military. And similarly, even the national government, they are also run by the military. So there is a national assembly or senate, but they are rubber stamps. All the decision-making power remains with the military army of Pakistan. So there is no democracy as far as Sindhi and Baloch are concerned. Even our Pashtun brothers, Kashmiris, Pakistanis are committing worst human rights atrocities against our people, and it is our basic right, it is our fundamental rights, it is our birthright to defend our own people. We are living our own soil, we are son of the soils, we are indigenous people, but we have been denied in Pakistan the basic rights, fundamental rights there. So our people are struggling to live in peace and security and with freedom. This is our right, and I will express my solidarity with Sindhi people, with our Pashtun brothers and Kashmiri brothers, and let's struggle together and get our freedom, our national sovereignty to live in peace and security with integrity and with honor in our own land. And at the same time, we would like to request the international community, especially United Nations, that they should intervene in Balochistan, in Sindh, in Pashtunistan, and in Kashmir. They should respect the people's self-determination and help them out from these atrocities. Thank you very much. There are so many speakers. I would thank you. Pakistan, stop abducting! Pakistan, stop abducting! Pakistan, stop abducting! Pakistan, stop abducting! Pakistan, stop killing! Pakistan, stop killing! Pakistan, stop killing! Pakistan, stop killing! Pakistan, stop taking, you say, our resources. Pakistan, stop taking our resources! Pakistan, stop taking our resources! Pakistan, stop
Pakistan, stop! Pakistan, stop! Pakistan, stop! Pakistan, stop atrocities against minorities. Pakistan, stop! Atrocity against minorities. Pakistan, stop! Pakistan, stop! Pakistan, stop! Atrocity against minorities. Pakistan, stop killing! Sindhi people. Pakistan, stop killing! Manoj people. Pakistan, stop killing! Pashtun people. Pakistan, stop killing! Kashmiri people. Pakistan, stop abducting! Sindhi people. Pakistan, stop abducting! Manoj people. Pakistan, stop abducting! Pashtun people. And Kashmiri people. Pakistan, stop abducting! Kashmiri people. Thank you, Saman Baloch. Now, I'll ask our Kashmiri friend, Amjad Yusuf. He is UK PNP President of Europe Zone, Amjad Yusuf, to say a few words. बहुत शुक्रिया वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस के दोस्तों का। और आज जो एक आपने एक इताद और जो तारीखी कौमों का एक प्रोटेस्ट जो उस ब्रूटल स्टेट और उस जालिम स्टेट के जिसने कश्मीरी, सिंधी, बलोच, पख्तून सबके राइट्स को वहाँ उस पे गासिब बना बैठा है और वहाँ लोगों के जो इमीडिएट मसाइल हैं या लोगों की जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के बजाय उस रियासत के अंदर जो अपने हुकूक मांगता है उसको वो मारते हैं। और वो वाहिद स्टेट है जिसने अपने लोगों के ऊपर जेट लगा के और गन्ने लगा के वहाँ लोगों को मारा है। मैं बात चीज़ों पे एक दो दिन से देख रहा हूँ कि यहाँ बात गुफ्तगूएं होती हैं। हम क्या कर सकते हैं? हम यहाँ प्रोटेस्ट कर सकते हैं। हम दुनिया के इन आलमी जो फोरम्स हैं इन पे अपनी आवाज को उठा सकते हैं। हम अपनी वॉइसेस इसको हम लोगों के सामने ला सकते हैं। मगर हम ये कहें कि इससे कोई हासिल नहीं होगा, ये बिल्कुल ये हमें गलतफहमी है कि इससे हासिल नहीं होगा। इन्हीं फोरम से इन्हीं इदारों से हमें तवक्को है और हम ये मुतालबा करते हैं इन इदारों से कि ये मुदाखलत करें। ये उस रियासत पे जो हिंदुओं पे जुल्म हो रहा है, जो बलोचों पे जुल्म हो रहा है, जो पख्तूनों पे जुल्म हो रहा है, जो कश्मीरियों पे जो जुल्म हो रहा है। आज वो बलोचों को मार के तो वहां से लाशें नीचे फेंक रहे हैं हेलीकॉप्टर से। आज वो हिंदुओं को अगवा कर रहे हैं और उनकी एजेंसीज हमें खुल के कहना चाहिए कि उनकी एजेंसीज और उनकी रियासती इदारे इसमें पूरी तरह से मुलव्वस हैं। आज कश्मीरियों के तमाम वसाइल पे पाकिस्तान के रियासत में कब्जा कर लिया और कश्मीरी अपने राइट्स की जब भी बात करते हैं तो उनको उठा लिया जाता है, उनके मुसलमानबंदी कर दी जाती है। हम ये कहते हैं कि कश्मीर के जितने वसाइल हैं, बलोचों के जितने वसाइल हैं, सिंधियों के जितने वसाइल हैं, उन पर उनका इख्तियार होना चाहिए। उन लोगों का इख्तियार होना चाहिए जो वहां के रियासती जो पुष्ट नहीं वहां के रहने वाले हैं। आज हमारे धनियों को उनके रुख मोड़ दिए गए। आज हमारे तालीमी निजाम को तहस-नहस कर दिया गया और यह पंजाब टेक्स्ट बुक का वो तारीख पढ़ाई जा रही है जिससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। हमें उस तारीख से लेना देना ही नहीं है। जैसे अब वहां पर तारीख पढ़ाई जा रही है कि जो था मोहम्मद बिन कासिम फातेह था। कभी किसी ने राजा दायर की बात की कि राजा दायर हीरो था, उसने उसके खिलाफ जमत की। हम राजा दायर को सलाम करने वाले हैं, ये राजा दायर की कौम है, हम उन लोगों को सलाम करने वाले हैं। आज कश्मीरियों के तमाम वसाइल पे, बलोचों के वसाइल पे जब कब्जा करके तो अगर कोई अपनी आवाज उठाए तो हम उस आवाज को बंद कर दिया वो रियासत और वहाँ और लोगों को जो वहाँ बुनियादी सहूलतें होनी चाहिए उसके बजाय वो बारूद, वो गन्ने, वो टैंक, वो जहाज वो खरीदते हैं। जब आपके पास इस 5 सालों में एक यूनिवर्सिटी नहीं बनी, एक यूनिवर्सिटी का बजट नहीं बना, मगर आपने
कल त्यारे 25 त्यारे शामिल करके किसको मारना है त्यारे लेके? तो आपने सिंधियों को मारना है, आपने बलोचों को मारना है, आपने पख्तूनों को मारना है, आपने कश्मीरियों को मारना है। इसके खिलाफ ये उनको शर्म आनी चाहिए। और हम ये दुनिया के बैनुल अक़वामी इदारों के सामने ये हम अमन के दाई हैं, हम अमन चाहते हैं, हम पूरी दुनिया में अमन के लिए आवाज उठाएंगे और जो भी दुनिया में पीसफुल मूवमेंट्स हैं हम उन मूवमेंट्स का साथ देंगे। और हम कश्मीरी जो एक अपनी तारीखी हैसियत रखते थे, उस रियासत को इसने इस ब्रूटल रियासत ने, इस जालिम रियासत ने, और इन्होंने हमारी तारीखी हैसियत खत्म करके हमें तकसीम करके, तो आज हमें 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया और वहां से सी पैक के मंसूबे लाए जा रहे हैं और सी पैक हमारी गर्दनों पे लाया जा रहा है। और कश्मीरी के वहां किसी को पूछते भी नहीं है कि ये कौन से सी पैक आ रहा है। ये इससे आप मुतासर नहीं हो रहे हैं, ये इससे जिनके जहां से आता है वो सबसे ज्यादा मुतासरीन है। इसके खिलाफ हमें आवाज उठानी चाहिए। हमें रियासत के उन सारी बदमाशियों के खिलाफ जो पख्तूनों के साथ कर रहे हैं उसके खिलाफ हमें आवाज उठानी चाहिए। और हमारे पास यही फोरम है, यही इदारे हैं जिनके सामने हम पुरअमन तरह से और पुरअमन तरीके से हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते रहेंगे इस रियासत के इसकी उन पॉलिसियों के खिलाफ जो पॉलिसियां हमें जो है वो दिन ब दिन पीछे ले जा रही हैं। वो जो भी कौमें, जो भी तारीखी कौमें वो इस रियासत से मुतासर है और इसके खिलाफ हमें यकजहती करनी चाहिए। और ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि ये इदारे हमें कुछ नहीं दे सकते। हमें इनके लिए इन्हीं के सामने है, हमने यही डोर नॉक करने हैं और यही हम कहते हैं कि यही हम पुरअमन एहतजाज से चीजें हासिल करेंगे। थैंक यू वेरी मच। सिंधी कांग्रेस के दोस्तों Pakistan stop occupying. We say our land. Pakistan stop occupying 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 our land. Pakistan stop stealing our water. 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 We want freedom. We want freedom. We want freedom. We want justice. We want justice. We want justice. We want justice. Cannot want justice. Pashtun want justice. Sindhi want justice. We want justice. We want justice. Wake up, wake up. UNO, wake up. 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 Thank you very much, Sardar Amjad Yusuf. Now, I will ask another of our Baloch friend, Munir Mengal from Baloch Voice Association, Munir Mengal, to say a few words. Thank you. Thank you, Hidayat Bhutto. I am highly thankful to World Sindhi Congress for organizing such an event in front of UN, where we have to try on those declarations, on those conventions which UN and her member states have promised to the humanity that we will give these sort of basic human rights to the humanity throughout the globe. Unfortunately, why we are here today, these pictures, these photos, each of them shows abuse of a right which UN and her bodies have promised to the humanity. All these pictures we are seeing, some of them are victims of enforced disappearances. Many of them have been killed. Many of them have been killed extrajudicially. And many of them have been converted forcefully. The religious conversion is a problem in Sindh, which all of us, all UN bodies, all UN NGO members, they see through media outlets, through social forums, that there has been
cases of forced conversion on daily basis, on weekly basis, on monthly basis. How this has happened, and the UN, you have promised to the humanity that you will give each and everybody freedom of expression, freedom of practice of religion, but unfortunately, the religious minorities in Sindh, particularly the women, particularly underage women, particularly the ones who have a beautiful face, whether they belong from Hindu, whether they belong from Christianity, from any religion, on daily basis we hear a news that today she has been kidnapped. There's no news for 2-3 days about her, and then we receive an information, Alhamdulillah, now she is Muslim, and a Muslim Imam has married her. And this is the worst kind of abuse of rights which we are facing in Sindh. And the UN and her bodies, it's your responsibility, it's your promise. Now it is up to you. You have to take some effective steps that why the women are being victims in Sindh like this way. On the other side, the Sindh has a culture, Sindh has a history, Sindh has a language which has given to the people who are there, not only to the Sindhis. That culture has given many things to the whole region. But unfortunately, there's a state, that state is a member state of UN. That state has signed on the declarations and conventions of the UN. But unfortunately, you are not taking any step against that. That state is going to erase the history, the culture of Sindh. That state has implemented such sort of textbooks, education system, which is going to erase the language of those people. It is not my words, these are the words of the UN. Erasing the history of a nation, erasing the culture of a nation means erasing that nation, those people from humankind. And this is what is being done in Sindh on daily basis, on weekly basis. We are getting that. Then there is a photo, there's a picture that says that no to CPAC. What is CPAC? UN, these are the UN two members, Pakistan and China. They have made an agreement against the will of the people. Again, you say the same thing in agenda item 10, that any sort of mega project which is against the will of the people, which is without the consent of the people, that is an illegal project. And UN bars, her members, all members have promised that any project which is against the will of the people, which is against the consent of the people, UN and her other bodies, UN, her members, other members will not give any sort of technical assistance to that, will not give any sort of financial assistance to that project, will not consider that project as a legal project. But this is being done by your member states, and it is again your turn. You have to take effective steps. You have to take some steps to remedy this action of your member states. So these are the things which not we, but the whole humanity have trusted on you, and you have promised to the all nations throughout the globe that you will protect these sort of abuse of rights. And we are here to urge you, UN bodies, UN treaty bodies, that you take action, you investigate these issues, you have to intervene, and it's a time for your intervention. Thank you, sir. Pakistan, stop occupying! Our land. Pakistan, stop occupying! Our land. Pakistan, stop occupying! Our land. Pakistan, stop stealing! Our waters. Pakistan, stop stealing! Our waters. Pakistan, stop stealing! Our waters. Thank you, Munir Mengal. We are here against the atrocities of Pakistan committed against the oppressed nations of Pakistan. Sindhis, Baloch, Kashmiris, Pashtuns are united, and against the minorities, mainly in Sindh, they are killing minorities. There is a photo of Satan Lal, who was tortured and threatened by Pakistan to leave Sindh, and he refused, and he was murdered by its proxies. And there is another photo of Notan Lal. He is a principal in Ghotki, and he was sentenced for life against the fake allegations of blasphemy law, and he is in prison. We are raising voice for him.
we are thankful for global human rights friends who have joined us. Now I will request Emma from GHRD to come and say a few words and show solidarity with Sindhi nation and the President nations of Pakistan. Wake up, wake up! UNO, wake up! Wake up, wake up! UNO, wake up! Wake up, wake up! UNO, wake up! I want to thank everyone for being here today and the World Sindhi Congress to organize this protest. We are here with Global Human Rights Defense, and we focus on the atrocities, the heinous crimes that are committed against the minorities and marginalized groups in Pakistan. Think of women, think of children, think of the LGBTQ community, and every single person portrayed here. They have been killed by the Pakistani government, and we are raising awareness, and we are doing everything in our power to share their stories, to raise awareness, and to urge the international community to take action. We are asking everyone to share these stories, to raise awareness, and to fight for the rights of these people, because their human rights are being taken away from them completely, and we need to make sure that action are taken right now. Thank you. Pakistan is stop atrocities against minorities. Pakistan is stop atrocities Against minorities! Pakistan is stop atrocities Against minorities! Pakistan is stop atrocities Against minorities! Release Not the law! 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 Not the law! Thank you, Emma, for your support here. Now, there is our Pashtun friends are also here, PTM friends, Mr. Mashrik Wal, he is president of PTM Italy zone. Mashrik Wal, say a few words. बहुत मेहरबानी लाखू साहब, आपका भी सबका बहुत मेहरबानी। हम जिस तरह भाई ने बोला, हम इधर अपना आवाज उठाएंगे। यही जगह है जिसमें लोग उस लोगों का आवाज सुनते जिसमें जन्म हो, लेकिन हम अपना आवाज उठाते रहेंगे। बड़ों के लिए भी आवाज उठाएंगे, पश्चिमों के लिए भी उठाएंगे, सिंधियों भाई के लिए भी और मनोज भाई के लिए भी आवाज उठाएंगे। अभी मेरे हाथ में ये फोटो है, सर जी ने बोला कि 5 साल से जेल में है। इस तरह बहुत जवान है, पश्तूनों में, बड़ों में, सिंधियों में, कश्मीरियों में कि पाकिस्तान आईएसआई रियासत की तरफ से बेगुनाह जेल में पड़ा हुआ है। उसका कोई कसूर नहीं, कोई सजा गुनाह नहीं होता, लेकिन वो जेल में पड़ा होता है क्योंकि वो अपने लोगों के लिए आवाज उठाते हैं, अपने हक के लिए लड़ता है। ये इस लोगों का गुनाह है। अभी अगर हम देखें तो पश्तूनों को हनीफ फरदीन, अली वजीर, वैस अब्दाल, फहीम वजीर, हमारे और बहुत लीडर है जो पाकिस्तान की रियासत में बड़े हुए जिलों में 2 साल से 3 साल से, क्योंकि उस लोगों का गुनाह क्या है जो अपना हक मानता है। जो लोग अल्लाह ताला ने हमको जो सरजमीन हमको अल्लाह ताला ने दिया, वो सरजमीन पे जो हक चीजें वो हमारा हक है। अगर बनो चुका है तो बनो चुका है। फिर पाकिस्तान रियासत ISIHQ वो जो जंगल सब बांट कर खा रहे हैं और हमारे हक अपने पंजाब में जाते हैं। अब अगर आप देखें तो पानी पेशावर से जाता है, लेकिन पेशावर से बिजली नहीं, बिजली पंजाब में बिजली होता है लेकिन पेशावर में नहीं होता। अगर आप देखें तो गैस बलूचिस्तान में है, लेकिन बलूची भाई गैस नहीं कर सकता कि उस लोगों के लिए ले दी जा सकता। इस तरह से जो पानी आता है वो लेके वो पंजाब तक जाते हैं, लेकिन उसमें वो लोग उस पानी में ये लोग यूज नहीं कर सकता। ये हमारा गुनाह जो अपने लोगों के लिए हम हक उठाते हैं। इंशाल्लाह हक उठाते रहेंगे। इस अपने भाइयों को नहीं बोलेंगे जो लोग हमारे अपने देश के लिए लड़ते हैं, जो अपने लोगों के लिए आवाज उठाते हैं, जो जेलों में पड़ा हुआ है, इस लोगों के हम साथ देंगे। इसके लिए हर जगह हर ऑफिस में हम इसका आवाज उठाएंगे। बहुत बहुत मेहरबानी। थैंक यू। Pakistan is stop occupying. Follow our lands. Pakistan is stop occupying. Our lands. Pakistan is stop occupying. Our lands. Pakistan